Hello everyone, welcome again. Now today we are going to start our new poem Father Returning Home and this poem is written by Dilip Chitre. आज हम नई पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फादर रिटर्निंग होम और ये पोएम लिखी है दिलीप चित्रे. Now to talk about the poet, this poet also the recipient of Sahitya Academy Award and most of his poem was just based or are based on that the common thing that we observe in the society. So and in this poem he draws a characteristic of, he just portrays the character of a father when a father is of old age and how he returns home from his office and what he found his way and how he just found the beverages that being served to him by the family members and how the family members just treated these old man. This is all about the poem. फादर रिटर्निंग होम एक ऐसी पोएम है जहाँ पर फादर के बारे में कहा गया है. मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी सी कि बहुत सारी जो पोएम्स होती है फिर बहुत सारी जो स्टोरीज होती है इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द मदर. बहुत बार हम जो गाने भी सुनते हैं शायद से मम्मी के इस पर ज़्यादा होते लेकिन बहुत बार शायद से फादर को हु इज़ द अर्नर सो कॉल्ड द अर्नर ऑफ द फैमिली ही इज़ मेनी टाइम्स डिप्राइव्ड ऑफ द लव ऑल्सो. बहुत बार ऐसे होते हैं कि उसको घर का जो एक होता है सूदिंग एटमोसफियर जो सूदिंग वर्ड्स होते हैं या फिर जो लविंग वर्ड्स होते हैं शायद से फादर को वो नहीं मिलते. वाई? बिकॉज ही जस्ट गोज मॉर्निंग टू द ऑफिस एंड कम्स इवनिंग लेट to the family and since he is just unaware of the family materials, family affairs also, so that's why many times children also just trying to avoid to speak with father also. अब यहाँ पर ऐसे होता है कि बहुत बार फादर बहुत मतलब जल्दी ऑफिस में जाते हैं, लेट ऑफिस से घर आते हैं. ऐसे इसमें बहुत बार घर में क्या हो रहा है पापा को पता नहीं होता है, फिर घर का जो अर्नर हम जिसको कहते हैं उसको पता नहीं होता है. एंड मेनी टाइम्स जो बच्चे भी होते हैं घर के वो भी शायद से अपने पापा से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं या फिर ही व्हाट द चिल्ड्रन फील अबाउट देयर पेरेंट्स. बहुत बार जो ओल्ड एज के जो फादर होते हैं फिर ओल्ड एज के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे अपना सीक्रेट शेयर करना है फिर फीलिंग शेयर करना शायद से बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है. सो इन दिस पोएम द पोएट नरेट्स अबाउट अ मैन who is of old age and who just a commuter who goes office daily in the morning and come late in the evening also and how he finds the home, how he finds the journey. It is all about the poem. That poem name is Father Returning Home. So now we are going to start our first line. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Now the poet tells us that my father travels on the late evening train. Means when my father travels by the train, he just travels by the train at the evening time. And that's why the poet just wants to say that he just coming home at the evening, he just traveling by the train at the evening time. यहाँ पर पोएट हमें ऐसे बता रहे कि मेरे जो अब पोएट अपने पापा के बारे में फादर के बारे में कह रहे हैं कि मेरे जो फादर है वो ऑफिस से इवनिंग को आते हैं, शाम को आते हैं और किससे ट्रैवल करते हैं, ही इज जस्ट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. स्टैंडिंग अमोंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. स्टैंडिंग अमोंग, अब यहाँ पर हिज फादर इज स्टैंडिंग वाइल ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन. अब जो फादर है वो क्या है, वो खड़े हैं कहाँ पर, ट्रेन पे. अब यहाँ पर खड़े क्यों है, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एनी प्लेस टू सीट ओवर देयर. उनको बैठने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं, इसलिए फादर इज स्टैंडिंग ओवर देयर. एंड साइलेंट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब people who daily just travel by train or by bus and they just go for the office, that is called the commuters. commuters का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो रोज ट्रैवल करते हैं फिर वो बस से हो ट्रेन से हो और जो ऑफिस जाते हैं डेली और डेली घर वापस आते हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटर्स. नाउ साइलेंट कम्यूटर्स हियर आर द कॉल्ड द साइलेंट. हाउ आर द कम्यूटर्स, कम्यूटर्स आर साइलेंट. यहाँ पर साइलेंट कम्यूटर्स का मतलब ये है कि ट्रेन में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर. दैट वी कैन सी पिक्चर ऑन पेज नंबर दैट इज कॉल्ड 170. दैट फादर इज स्टैंडिंग over there. एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शायद से मोस्ट ऑफ द लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन दे आर जस्ट फीलिंग टायर्ड, दे आर जस्ट गेटिंग टायर्ड ड्यू टू दैट टॉयलिंग हार्ड डे, दैट इज अ टॉयलिंग डे. अब यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं दे आर नॉट स्पीकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें नहीं कर रही है. उसके पीछे का रीज़न है कि शायद से दिन भर जो टॉयलिंग डे था उनका, मतलब जो हार्ड वर्क उन्होंने किया था वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, they are feeling tired now and that's why they are not talking with each other. That's why it is called silent commuters.
in the yellow light. Now in the yellow light means evening time. Yellow light shows or reflects the time that is of evening time. So that's why the poet just tells us that my father is returning home at evening and he is just traveling by train, and in that train he just coming by standing over there, and no one is speaking with each other in that train, and it is the evening time. And to show the evening time, the poet has used the word yellow light. Suburbs slide past his unseen eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. Now, suburbs slide past his unseen eyes. Here, suburb means suburban area, that is the outside area, or we can say the new area of the city, that is called suburban. Now, slide past his unseen eyes. Past his unseen in the sense that we already seen about two lines that father is just standing over there in the train, and many people were also in the same condition because most of the people did not get uh, seat to sit over there. So that's why there is a crowded place in the train. वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, उस ट्रेन में बहुत भीड़ होती है. ऐसे इसमें फादर ऑल्सो गेटिंग टायर्ड, पापा भी अभी जो फादर है वो भी बहुत टायर्ड फील किए हुए उन्होंने. एंड दैट्स वाई वहाँ पर जो है जहाँ पर बोला कि स्लाइडिंग पास्ट इज अनसीइंग आइज, जो सबर्बन एरिया में जहाँ पर शायद से नई नई चीज़ें हो रही है, नया नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस सिटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं सब अर्बन, मतलब नया शहर या फिर नया सिटी. जो सिटी है उसके जो आउटर है दैट इज कॉल्ड सब अर्बन. वहाँ पर दैट इज कॉल्ड हिज अनसीइंग आइज मीन्स द फादर इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव लुक टू दैट स्लाइड, टू दैट एरिया, और टू दैट वी कैन से द न्यू we can say that the new thing that is coming, that is happening over that city. अब यहाँ पर जो फादर है वो खड़े हुए जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेन में. अब यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि जो फादर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बाय स्टैंडिंग, खड़े होकर. अब जो विंडो है, विंडो से शायद से उनको बाहर कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सब अर्बन एरिया मतलब नया एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं नए नए. ऐसा जो स्लाइड है, स्लाइड इन द सेंस जो सीन्स है, वो सीन से जो फादर है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लुक दैट सीन. मतलब यहाँ पर जो फादर है वो जो सीन शायद से पास हो रहा है विंडो में से जो दिख रहा है ट्रेन जाते जाते, वो शायद से पापा या फिर जो फादर है वो इंटरेस्टेड नहीं है वो सारी चीज़ें देखने में. And his unseeing eyes means he is not interested. We can see that he just unnoticing that scene. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. Now, how is his pant and shirt? जो फादर है उसके पैंट और शर्ट कैसे सॉगी, सॉगी मतलब वेट बाय मॉइस्चर, शायद से पसीने की वजह से बोल सकते हैं हम लोग, स्वेट की वजह से, बिकॉज ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड है, शायद से वहाँ पर बहुत सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर होता है जब बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ होती है. एट दैट टाइम स्वेटनेस बहुत आता है. सो दैट्स वाई द फादर्स शर्ट एंड पैंट्स बिकम वेरी सॉगी, सॉगी मतलब गीला मॉइस्चर की वजह से. एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, एंड द फादर हैज़ वोर ब्लैक रेनकोट. फादर ने जो रेनकोट पहना है वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है. एंड इट इज स्टेन्ड विथ मड इन द सेंस वहाँ पर किसके दाग लगे हैं, मड इन द सेंस कीचड़ के. And his bag stuffed with books is falling apart. And the father is carrying a bag with himself. And in that bag he has just stuffed lot many books over there. अब ये जो फादर है जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास एक बैग भी है. अब ये जो बैग है उस बैग के अंदर बहुत सारे बुक्स है, बट इज फॉलिंग अपार्ट इन द सेंस द बुक्स आर नॉट वेल मैनेज्ड इन दैट बैग. इसका मतलब ये है जो बुक्स उस बैग में है वो बुक्स को अच्छी तरीके से रखा नहीं गया है. दैट्स व्हाई द पोएट सेज द बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. वहाँ पर जो बुक्स है वो इट इज नॉट मैनेज्ड वेल. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. Now his eyes dimmed by age in the sense the father is old. ये जो father है वो अभी ओल्ड है, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए शायद से उनकी आंखों से बराबर नहीं दिख रहा है. दैट इज कॉल्ड डिम इन द सेंस ब्लड. उनकी आंखों से बराबर नहीं दिखता है. एंड फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. नाउ फेड होमवर्ड इन द सेंस कि फादर इज ईगर टू मीट हिज फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि वो मॉर्निंग में जाते हैं जल्दी से, शाम को लेट आते हैं. ऐसे इसमें फैमिली के मेम्बर्स शायद से उतना ज़्यादा उनका डिस्कशन नहीं होता है, और दे आर नॉट वेरी मच दिस
we can say that discussing about their own problems or they are not sharing anything else with each other. So that's why कहीं ना कहीं जो father है, he is just eager to meet his family members as soon as possible. That's why it is called fade homeward through the humid monsoon night. Now it is the monsoon season, and in the monsoon season, especially in Mumbai, there is a humidity, and that's why it is called humid night. Night is not humid, but at night there is the humidity, and that's why we can say that the father's clothes are very soggy. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, और जहाँ पसीना ज़्यादा आ रहा है इसलिए राइटर ने अब वो लाइन में देखो क्या कहा है, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, मतलब उनके शर्ट और पैंट कैसे हो गए, सॉगी है. सो दैट्स वाई here the poet says, fade homeward through the humid monsoon night. Now here is figure of speech the writer has used, that is transfer epithet. Actually night is not humid. Actually epithet का मतलब होता है adjective, and when the adjective is transferred to the another word, that figure of speech is called transfer epithet. यहाँ पर epithet का मतलब होता है adjective, और यहाँ पर ये जो poetic device that is figure of speech यूज किया इस लाइन में, द ह्यूमिड मानसून नाइट, ये फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव किसी और वर्ड के साथ आता है जिसको वो उसकी कुछ क्वालिटी शो करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट. सो दिस लाइन हैज द फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर एपिथेट. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word dropped from a long sentence. Now the poet says that I have seen that my father just getting off the train, मतलब मैंने देख रहा हूँ कि मेरे father ट्रेन से उतर रहे हैं. And like a word dropped from a long sentence. Now the meaning of this sentence is, father has least importance in his family, but still he is hurrying to his family members. एक्चुअली जब ओल्ड एज के पेरेंट्स हो जाते हैं या फिर फादर हो जाते हैं तब घर में शायद से उनकी कंडीशन ऐसे होती है कि घर वाले उनको या फिर फैमिली मेम्बर्स दे डोंट गिव दैट मच वैल्यू टू द ओल्ड पर्सन, दे आर जस्ट इग्नोरिंग देम, दे आर नॉट टॉकिंग विद देम, एंड दे आर ऑल्सो सर्विंग टू देम वेरी स्टिल फूड. ऐसे इसमें हम कह सकते हैं कि ऑफकोर्स द ओल्ड मैन ऑल्सो वेरी ईगर, मेनी टाइम्स ईगर टू स्पीक विद देयर फैमिली मेम्बर्स, टू टॉक विद देम, टू शेयर देयर इमोशंस ऑल्सो, बट नो वन इज noticing them, they are just ignoring. So this line shows that like a word drop from a long sentence means the father has not that much importance in his family or in society also. Now in this sentence like word is used, so that's why this figure of speech is simile. Simile means when a thing is compared, and to make that comparison when the words are used like, as also, this figure of speech is called simile. And in this sentence father is compared to a word, so that's why this figure of speech is simile. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Now the poet says he hurries across the length of the grey platform. Now he is just getting off the train. फादर ट्रेन से उतर गए हैं, एंड ही जस्ट मीन्स वो बहुत जल्दी में है. वो क्या कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रैक है, जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आ रहे हैं. नाउ हियर ग्रे प्लेटफॉर्म मीन्स हियर द वर्ड ग्रे प्लेटफॉर्म शोज द ओल्ड एज ऑफ द फादर. Crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Now he is just trying to cross the railway line as soon as possible. वो लेन में एंटर करते हैं, लेकिन उनकी चप्पल है, वो चप्पल कैसे है, स्टिकी है. स्टिकी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कीचड़ लगा हुआ है, मड लगा हुआ है. ऐसी वो जो फादर है उनकी चप्पल है. But he hurries onward means he is ignoring the troubles. He is ignoring the troubles of walking because his chappals are just stick with mud. उनकी जो चप्पल उनको कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फादर है वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे चलते वक्त, शायद से वो प्रॉब्लम को वो इग्नोर कर रहे, बिकॉज he just wanted to meet his family members as soon as possible. Home again. I see him drinking big tea, eating a stale chapati, reading a book. As the poet says, when the father returns to his home, at that time, how the beverages, how the food served to him, it is, I see him drinking big tea. It means the tea is not fresh. It might be
made in the afternoon also, and that same tea is going to be served to the father. Eating a stale chapati, reading a book. Chapati is not fresh also, and he just reading a book. Now here, weak tea and stale chapati. This shows that this father is not getting nourishing food, means weak tea and stale chapati means non-nourishing food is going to be served by the family members to this old man, to this old father. It means in these stanzas we can see the condition of the father. He just works hard in that office, and when he comes at home in evening, at that time no one is trying or no one is interested to speak with him. He is going to be served a very stale food. And as we see that in the old age the person needs a very nourishment food, very nutritious food, but still it is the reality of the society that many times the father or the old man is going to be ignored by the family members. This is all about today. In our next video we will see the rest of the stanzas. Thank you.